Please, Gurudev. किसमें बोल रहे? इसमें वर्णन किया। अरे सब जगह में है, सब जगह। अरे हरि का सुना। Gurudev. ये पूरा कर दो ना। I don't remember. Yes. एकादशी को सुना। Chama Saki. हरिनाम कितने क्या बोला एकादशी का? एक माला जपा नहीं. So I'm asking to Gurudev so that he can finish that Leela from yesterday, but he said no. They didn't know how Gopis told the flute of Krishna at the end of it. But Gurudev said no. I'll speak Ekadasi Katha. How many rounds you chanted? Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shivasadi Shri Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama मेरे गुरुपाद परमो नेत्रीला प्रविष्टम कृष्णा अष्टोत्तर सत्यसिंह राम तत्व भगवान विष्णु महाराज एवं नेत्रीला प्रविष्टम Remember, it says in Maharaj, Haran Goswami Maharaj. Because there are those faith which remove all the fear from my unlimited obeisances. तत्पश्चात नेत्रीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज from Maharaj, my obeisances, समस्त वैष्णव and to all the Vaishnavas, the Vaishnavis, the feet of everyone. मेरा साष्टांग दंडवत स्वीकार हो। I offer my Dandavat हम लोग भजन prayers. रस ग्रंथ So we're discussing the Bhajana Rahasya. श्रील भक्तिविनोद ठाकुर In this book, Srila भजन रस Bhaktivinoda ग्रंथ Thakur में कैसे एक साधक is explaining how a sadhaka भजन करते करते performing bhajana slowly यानी भजन के द्वारा अनर्थ निवृत्ति हो करके he can be free from the anarthas शुद्ध नाम and start to chant the pure name, Shuddhanam. क्योंकि जब तक शुद्ध नाम Because until you're not chanting the Shuddhanam, नहीं हो तब तक अनर्थ निवृत्ति पूर्ण रूप से नहीं your anartha nivriti will not be completed until you're not chanting Shuddhanam. इसलिए So, अनर्थ निवृत्ति कैसे होगा? how to have anartha nivriti? नहीं यही नाम के द्वारा ही अनर्थ निवृत्ति होगा By chanting the और holy names, नाम anartha के द्वारा nivriti ही will come. शुद्ध And also by the holy names नाम itself प्रकाश also, होगा। the Shuddhanam will manifest. क्योंकि नाम ही Why? साधन Harinam और is नाम sadhan ही and Harinam is साध्य है। sadhya, समझ में आया? process and the goal. यही नाम करते करते नाम अपराध दूर हो जाता है और By chanting holy names, the offenses will go away. अपराध दूर होने पर And when the नमाभास हो offenses जाता will है go away, then और namabhas will come. नमाभास के बाद And after सुकृति namabhas, और sukriti. सुकृति जितनी पुष्ट And होते the more जाए your sukriti will be nourished, then और फिर शुद्ध नाम उच्चारण Shuddhanam, you'll be able to come to you, like you'll be able to pronounce Shuddhanam. समझ में आया? Do you understand? यही प्रोसेस क्योंकि This is the नाम process. एकमात्र साधन है Nam is the only sadhana. और नाम साध्य भी है And Nam is also the और goal, किसी sadhana. प्रकार इसलिए भगवान That's why in the Gita Swami नाम Bhagavan told, न साधति मांग योगम in the न Bhagavatam Swami सांग Bhagavan told, न सद्यस्तपस्तैगो जिता भक्तिर ममो वर्जिता he can be only attained by bhakti. By any other means, he cannot be attained. भक्ति के द्वारा ही I am attained by bhakti only, Krishna says. भक्ति लगता
नामाभास से सुकृति हो जाएगा। By chanting Namabhasa, you get Sukriti. पहले नामापराध रहता है, First you have the वही Namaparada. नाम करते करते Chanting the holy names. नामाभास हो जाए, Slowly, slowly, then Namabhasa will come. Then you have the और Sukriti. सुकृति के फलस्वरूप Then as the fruit of the Sukriti, सत्संग आदि you'll के be able द्वारा to get the association of sadhu and chant the pure holy names. Shuddhanam. This is the process. जितने परिमाण नामाभास होते The जाए, more your Namabhasa, वही the नामाभास more you क्या chant करते थे? Namabhasa, सुकृति उत्पन्न करा देते then Namabhasa makes your Sukriti, creates the और Sukriti. सुकृति के द्वारा And by the Sukriti, साधु संघ में शुद्ध नाम उच्चारण, in sadhu sangha, you'll be able to pronounce or speak Shuddhanam. This is the process indicated. यही नाम साधन और नाम साधन। Nama is sadhana process and also the goal sadhya. नाम अपराध तो धीरे धीरे नष्ट हो जाए, यही नाम नाम अपराध ही क्या है। करेगा, अपराध को धीरे धीरे, This holy name is slowly, slowly destroy the offenses. Holy name is और slowly फिर destroy the offenses. नाम अपराध जितने नष्ट होते The more जाएगा, your Namaparad is also destroyed, the more नामाभास हो जाए, Namabhasa will come. और नामाभास से And by the Namabhasa, फिर शुद्ध नाम उच्चारण you'll be able to speak Shuddhanam. है, ये प्रोसेस This is the process. है। साधु संघ के द्वारा चित्त निर्मल होता है। By sadhu sangha, your heart becomes purified. आज साधु संघ किसको कहा जाता है? What is sadhu sangha? सम्यक रूपेण Samyak Rupena, directly गमनम follow संघ, Gamanam. This is Sangha. Iti सम्यक Sangha. रूपेण Samyak Rupena Gamanam अर्थात Iti Sangha. साधु की Means to completely follow आदेश उपदेश जो हम पालन कर लेते the हैं, instructions of the saints. This is sadhu sangha. है? इसलिए साधु संघ का अधिकार है। So sadhu sangha. जितने परिमाण आप साधु संघ The कर more रहे you do the sadhu sangha, हैं, और उतने ही परिमाण आपके क्या होते जा रहे हैं? the more ना नाम अपराध दूर होते जा your रहे हैं, Namaparadas will go नामाभास away. होते जा रहे हैं, Namabhasa will come, and then आगे जाकर के शुद्ध नाम होती है। you will progress and you'll be able to speak Shuddhanam. समझ में आ रहा है? Do you understand? है? साधु तो आ जाते हैं, The sadhu किंतु comes, साधु के जितने विचार आप ग्रहण करते but all the conceptions that you can उतना able ही to grasp परिमाण from the sadhu आपका means the more you can imbibe yourself in what the sadhu is saying, then your offenses will go away and Namabhasa will come. इसलिए कहते हैं, इसलिए भगवान करें न साधुति मांग योगम, Krishna says, Nasadati manjoga. योग आदि Cannot attain to me by yoga and tapasya. प्राप्ति नहीं कर सकते। Krishna tells, न सदित मांग योग, न संक धर्म उद्धव, Hey Uddhav, you can also not attain to me by the Sankhya Dharma of Kapil Dev. है? वो भी अभ्यास करने पर भी नहीं होगा। ये कहते हैं, न You सदित be not be able to attain to me by that also. न सद्यस तपस त्यागो, Nasadas tapastyago. वेद अध्ययन आदि अथवा त्याग वैराग्य के द्वारा संभव You can also not attain to me by studying the Vedas and renunciation. किसके द्वारा होगा? न भक्ति योग, Only by Bhakti योग Yoga. अनुशीलन करना। They're following Bhakti Yoga, yes. भक्ति योग क्या है? What is Bhakti Yoga? भगवत नाम कीर्तन Chant holy names. है। अच्छा, 64 प्रकार के भक्ति के There are अंग बताए 64 lambs of Bhakti. हैं? 64 प्रकार के भक्ति के The अंग 64 बताए। lambs of Bhakti are there described. गुरु पदाश्रय से Starting in लेकर Guru के, Padashraya, हैं? जितने प्रकार के भक्ति के अंग बताए all the गए, limbs of Bhakti. ये कहते हैं आदु गुरु पदाश्रय, दीक्षा शिक्षा विश्रम देन गुरु सेवा। इसके बाद भी So तब भी Diksha, कहते Shiksha, फिर Vishram, कहते and Guru Seva, but then 64 प्रकार also भक्ति के अंग के वर्णन करने के बाद after describing the 64 limbs of Bhakti, also there are 9 limbs of Bhakti described. Like from the 64, 9 are more prominent. Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana, फिर 9 प्रकार Padaseva. की भक्ति के बाद And after describing 9 limbs of Bhakti, also from these 5 are like most. What are they? है साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, है मथुरा वास, श्रीमूर्ति श्रद्धा,
सकल साधन श्रेष्ठ ये पांचेर मुख्य अंग कृष्ण प्रेम जन्माय पांचेर अल्प संग है साधु संग नाम संकीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास Sankirtana Bhagavad Shravan Mathura Vas Shmati Shravan Sevan. श्रद्धा के साथ विग्रह सेवा करनी चाहिए. You have to serve the deity with faith. ठाकुर जी ले छोड़ कर चल गए. You go away and leave your deity behind. You travel with the deity and then you forget the deity and go away without the deity. You don't feed the deity, you don't do anything for the deity. ठाकुर जी के श्रद्धा के साथ You have to serve the deity with faith. जैसे ठाकुर जी का कैसे सेवा करेंगे? How to serve the deity? पुत्र वत सेवा. Just like you serve a son. आज वात्सल्य भाव से सेवा करो. With Vatsalya Bhav. जैसे कोई माँ अपने बेटा के लेकर के जाती है. One mother is carrying her son when she goes somewhere, to travel or somewhere. तो उसके खिलाते पिलाते हैं कि The नहीं? mother will take care of the food of the baby and give him food, water, everything. Yes. साधक के वास्तव में हो जाता है. भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन Bhaktivinoda Thakur actually describes that शांत दास सख वात्सल्य तक होता the है. sadhaka can reach until Vatsalya, और जो Shantadasa माधुर्य Sakya सेवा जो है Vatsalya. श्रृंगार रस But Madhurya Seva and Shringaras, this is only भाव में जा रहे in the stage of Bhav. हैं. राधा कृष्ण के प्राण प्रियतम This lover इस beloved माध्यम mood, से सेवा करना serving this mood of Radha and Krishna, lover beloved. उच्च स्तर में This जाए. is super high class, topmost. इसलिए कहते हैं पहले That's why first दास्य भाव से you have to serve in Dasya फिर Bhav, दास्य भाव Dasya Bhav, and then you go जाकर to के फिर सख भाव से सख- वात्सल्य भाव से आगे माधुर्य Vatsalya Bhav, है. आप डायरेक्ट and then Madhurya Bhav. You माधुर्य cannot भाव से सेवा नहीं directly कर serve in Madhurya Bhav. है. आज क्योंकि पहले आपके अर्चन मार्ग में चला. First you have to follow Archana Marga. अर्चन मार्ग की कहा जाता है वैदिक मार्ग का. Archana Marga is Vidhi Marga, the path राधा of rules and कृष्ण की regulations. सेवा जो होते हैं क्या है? कौन सा मार्ग में होता The service of Radha and Krishna is in which kind of Marga? Bhava Marga, Bhav Seva, Do you understand? Raganuga Marga. किंतु इसलिए कहते श्रुति स्मृति नारदादि पंचरात्रि विधि But if you don't follow the rules of the scriptures, and if you think you are a one-pointed devotee, you are just creating disturbance to the society. श्रुति स्मृति आदि There are many शास्त्र rules in the की विधि Shruti के विधान Smriti. नहीं करते. If you don't follow these rules, यदि कोई एकांतिक रूप में and you think you are one-pointed devotee राग मार्ग में चलना in चाहे Raga Marga, तो उस spontaneous बात path, में केवल हो जाता है. actually only creating disturbance for yourself and for society, this shloka is saying. इसलिए साधक कैसे करें? So how the sadhaka has to follow? Has to always follow Archana Marga, the path of rules and regulations. If you follow this path, slowly you'll be able to enter also Raga Marga. विधि मार्ग चलो. You have to follow the rules of Vidhi Marga. ये विधि मार्ग और रत जने. तब ये विधि मार्ग करते करते Following the rules slowly, और हरि कथा आदि श्रवण करते करते and by hearing तब Harikatha ये slowly, लोभ उत्पन्न होता है. eagerness will come, lobe. और लोभ उत्पन्न होने पर And when this फिर लोग lobe will राजमार्ग come, में प्रवेश then करते you हैं. can enter Raga Marga. इसलिए कहते path of हैं spontaneous devotion. जने स्वाधीनता रत्नता ने राग मार्गे कराना प्रवेश. राग मार्गे कराना प्रवेश. Raga Marga Karana तब Pravesh. प्रवेश करते. You will be able to enter Raga Marga later. तात्पर्य क्या है? पहले अर्चन Means first you have to follow Archana Marga. Means अर्चन माने विधि मार्ग. Vidhi Marga, path of rules and regulations. विधि मार्ग के जब उत्सृज विधि मार्ग के छोड़ कर If you're giving up the rules and regulations Vidhi Marga and don't think you're doing devotion, not possible. Acharyas explained that देखो एक दो प्रकार के मार्ग होते हैं. two kinds एक of विधि ways, मार्ग paths. और एक Vidhi Marga and रगानुग Raganuga Marga. राजमार्ग Raga Marga. है. राग मार्ग में विधि मार्ग है. In the Raga विधि मार्ग Marga, में राग मार्ग नहीं है. Raga Marga is not included in Vidhi Marga, but Vidhi Marga is also included in Raga Marga. This is the conception. कोई राग मार्ग में प्रवेश करते उसको भी विधि If the मार्ग person is following Raga Marga, Vidhi Marga is also included. ये सब दिखा रहे हैं. अर्थात ब्रजवासियों की कोई एक भाव प्राप्ति करने के लिए So to get one of the mood of the Brajabasis, साधक शरीर के द्वारा विधि मार्ग आदि in the पालन body of the sadhak, you must follow all the vidhis, the rules. But in your internally conceived body,
ब्रजवासियों internally की conceived body, सेवा अनुगत्यमयी then you serve another guy and some the Vrajavasis. ये दिखा रहे। This is the thing being explained. इसलिए हमारे गोस्वामी वर्ग के सभी क्या That's है? just our Goswamis, all of them. साधक रूपेण सिद्धो रूपेण च अत्र ही सेवा Sadhaka Rupena, Siddha Rupena, Cha Atrahi, serving in the Sadhaka Rupa and Siddha Rupa. तद्भाव लिप्सुना ब्रज लोक अनुसारत सेवा साधक रूपेण असिद्ध रूपेण सेवा दो प्रकार की कहा। Two kinds एक of साधक service, रूप Sadhaka Rupa और सिद्ध रूप। and Siddha Rupa. साधक रूप में क्या भजन होता है? What happens in संख्या पूर्वक नाम Sadhaka Rupa, form of a sadhaka, chanting fixed rounds, renouncing hunger, sleepiness, always remembering Radha Krishna, writing books, singing many prayers, like the Goswamis did, साधक रूप में संख्या पूर्वक नाम करना। chanting fixed rounds, Sankhya Purvaka, Nama. इसलिए जो कहता है पांच Fixed प्रकार की rounds. जो कहा है साधु संग So the 5 kinds of limbs of bhakti: Sadhu Sangha, Bhagavad Shrav, Maturavas, Shrimati Shradaya Sevan. सकल साधन श्रेष्ठ Actually, पांचेर मुख्य अंग From all these, कृष्ण प्रेम जन्माए पांचेर all the limbs of bhakti, these 5 are the main. And if you get in contact just a little bit with them, very easily can get सब Krishna में क्या prem. लगा हुआ है? साधु संग लगा। But actually, in all these limbs, Sadhu Sangha is also included. साधु संग नाम Not संग little Sandhavas. नाम संकीर्तन कैसे होनी Panchira चाहिए? Alpasam. साधु संग Krishna Prema Janmaya. साधु संग नाम संकीर्तन भागवत श्रवण Okay, so भागवत कैसे श्रवण whatever होना you have चाहिए? to do of these 5 limbs, you have to do in Sadhu Sangha. Chant only names with Sadhu Sangha. Bhagavad Shravan with Sadhu Sangha. मथुरावास Maturavas. या मथुरावास माने Staying Mathura means actually Braj Mandala, Mathura Mandal माथुर मंडल में यानी ब्रज में means in Braj. है वास करना नहीं You चाहिए। have to live in Braj. शरीर के द्वारा ब्रज If में it's यदि not वास possible नहीं to हो, live in Braj with your कैसे वास करना body, चाहिए? you should stay there with your मन के द्वारा वास mind. है। शरीर के द्वारा ब्रज में वास कर रहे हैं किंतु मन You're living in Braj with your body, बाहर but your पड़ा रहता है, mind तो is ब्रज वास नहीं outside. होता है। Actually, you're not actually living in Braj. कोई बाहर रह रहे हैं Some people ब्रज live के बाहर रह outside रहे of हैं, Braj, किंतु मन के द्वारा ब्रज but की with their चिंतन mind, होता है। they're thinking about Braj. उसकी क्या होता है? This ब्रजवास हो जाता is है। real Brajbas. हैं? स्थूल विचार नहीं लेकर के सूक्ष्म So you विचार should में not accept the gross conception. Instead, you should enter the subtle स्थूल conception. में कोई वृंदावन में रहा In gross conception, maybe someone is living in Braj, but thinking about बाहर की होता है outside things. हॉलैंड की चिंतन हो रहा Thinking about Holland, for example. है ब्रज में वृंदावन में रह Staying करके हॉलैंड Braj, की but चिंतन thinking about Holland. और हॉलैंड में रह And when करके you're Holland, you're thinking about ब्रज की चिंतन वृंदावन Braj की चिंतन होता and है तो Vrindavan. श्रेष्ठ कौन सा है What is best? हॉलैंड में रह करके Is to वृंदावन। stay in Holland thinking about Vrindavan. हॉलैंड में रह करके वृंदावन वास हो रहे हैं Because when you're in Holland, you're really in Vrindavan Vas because your mind is in Vrindavan. But you're in Vrindavan physically, but in your mind you're thinking about कहीं भी Holland. रहे वो So महत्व नहीं actually, है not important why you're staying physically. It's not important why you stay वृंदावन physically में रहे in अथवा नहीं रहे Vrindavan or विशेष not. महत्व नहीं This दिखाता is not so important क्योंकि as साधक physically अधिकार के अनुसार because it depends on the eligibility of the sadhaka. Do you understand? सब चाहते हैं हम वृंदावन में रहें Everyone wants to stay in Vrindavan. तो वृंदावन में कैसे रहना But so है how to stay in Vrindavan, right? ये भी दिखा रहे हैं This must be वृंदावन analyzed. में रहना तो बहुत अच्छी है Actually, it's very good to stay in Vrindavan, yes. किंतु वृंदावन में किस प्रकार But रहना है? how are you यदि staying? वृंदावन में रहना है बस If you are to stay in Vrindavan, you should be concentrated. है, मन को वृंदावन Your से mind बाहर your mind should never go out of Vrindavan. मत रखो वृंदावन में रखो Should stay in Vrindavan only. और वृंदावन में रह करके दूसरी But if स्थान you're में staying in चिंतन हो रहे Vrindavan हैं, तो thinking वृंदावन about another place, actually you're not actually doing Vrindavan Vas. है? वो उत्तम मत है जी। But यदि the best, किसी of भी course, if you're वृंदावन में physically रहते हैं, and mentally in वृंदावन Vrindavan, की चिंतन then it's superb. तो वो superb. best It's the best. है। किंतु साधारण साधक के लिए But संभव for नहीं normal sadhakas, this is not possible. है। अनेकों जन्म तक लोग जो- After जिन लोगों ने many भजन lives, किया those who did bhajana for many है, lives, उनके लिए संभव। जैसे हमारे then they दोस्त can do that. Like Rupa Sanatana, for example. उनकी ब्रजवास उनकी कहा जाता है ब्रजवास। They are really Brajavasis. They are staying in Braj really. रूप सनातन ही परफेक्ट Rupa Sanatana, they are the perfect Brajavasis.
है समझ में? Do you understand? क्योंकि ब्रज में रह करके और ब्रज के बाहर कोई चिंता नहीं Because they are in Braj and they don't think about anything else other than Braj. है। नाम गान This sloka explains also. Sankhya Purvika Namagananati Bhi. निद्रा आहार व्याय प्रतिचितो चक्र राधा कृष्ण गुणस्तुति मुझमानंद सम्मोहतो वंदे रूप सनातनो सुजिलो रूप सनातन वृंदावन में रह करके कैसे भजन Rup Sanatan were staying Vrindavan and how they were doing their bhajan. अच्छा जी को Okay, but वृंदावन if में you रहना say, है कि नहीं should I live in Braj or not then? What is the conclusion? Okay, it's good. प्रति बन जाता है You're great Sukriti staying in Vrindavan. हाँ, क्यों धाम वास बढ़ते नहीं जाता Because Dham Vas will never go in vain. To stay in the Dham will never go in vain. To stay in Dham will never go in vain. है? समझ में आता Do you understand? है? किंतु But वह पर अधिक अपराध होने के also the offenses there are more easily इसलिए doable. महाप्रभु ने क्या कहा? Offenses in the Dham are more easily doable. That's why Mahaprabhu told to go to Vrindavana, don't stay for longer and don't climb on Giriraj to see Gopal. वृंदावन जाओ Go to Vrindavan, yes, but don't stay for longer. परिक्रमा हो गया भगो After parikrama, go. Run away. Bhago. Run away. वृंदावन परिक्रमा हो गया After parikrama, Vrindavan parikrama, चले जाओ अपने अपने स्थान पर go out, get back to your own place. What's she saying? But in Navadvipa, no, in Navadvipa you can stay because Navadvipa offenses are not considered. हैं? नवद्वीप जो है अपराध नहीं है। In Navadvipa, the offenses are not considered. अपराध भंजन Actually, in Navadvipa, all your offenses are destroyed. Aparada Bhanjana Pitastal. अपराधी के व्यक्ति भी नवद्वीप धाम Even the offenders, आश्रय दिए they get shelter in Navadvipa Dham. इसलिए नवद्वीप सेवा नवद्वीप So धाम to serve Navadvipa, then this is very special glory. हैं? हम लोग के देखा जाए अधिक जो I गोस्वामी saw the वैष्णव mainly नवद्वीप the में Goswamis, रहते they used to do bhajan in Navadvipa. हैं? Mainly Goswamis, they used to do bhajan in Navadvipa. रूप सनातन के छोड़ कर Except Rupa and Sanatana, mainly, all of the others, नवद्वीप धाम में रहे they stayed in Navadvipa Dham. रूप सनातन नवद्वीप गए कि नहीं गए I don't know if Rupa Sanatana went to Navadvipa, like it's not written any proof that Rupa Sanatana went to Navadvipa or not. गए थे They gone? They have been there. किंतु ये लोग तो नवद्वीप में But रहे anyway, they are always, नवद्वीप मंडल में रहे they were in Navadvipa Mandal. They were born, I think, नहीं नवद्वीप मंडल में रहे they were living in Navadvipa Mandal, Rupa Sanatan. नवद्वीप मंडल में पड़ता है रूप सनातन Ram Kiligram? Navadvip. रामलीला के नवद्वीप So Ram Kiligram, the village where Rupa Sanatan used to live, and I don't know born or not, but live there. This is also in Navadvipa Mandal, like the great area of Navadvip, sacred area. गोस्वामी पाद तो नवद्वीप धाम पर Ram Kiligram. है। Jiva Goswami did parikrama of Navadvipa, सुना नहीं जाता किंतु रूप सनातन but Rupa Sanatan, we never heard राम के लिए if they were in Navadvipa, really. But Ram Kiligram, where they used to live, is also around, like inside the area of greater Navadvipa Mandal. कौन रूप सनातन अधिक समय जो Rupa है Sanatan mainly, they महाप्रभु stayed, के मिलने के पहले तो राम के लिए काम like before meeting Mahaprabhu, they used to stay in Ram Kiligram, in this place, Navadvipa Mandal. After that, they left this and went to Braj. से फिर दोबारा नहीं गए And I think they didn't go back. They just continued there in Braj. समझ में आया? Do you understand? मेरे कहने की तात्पर्य है So what I want to say is that धाम को आश्रय करना I have to take shelter on जितने भी Navadvipa Dham. गोस्वामी हैं, सब नवद्वीप All our धाम की Goswamis, है आश्रय किया they took shelter of Navadvipa Dham. क्योंकि नवद्वीप धाम में अभिन्न वृंदावन माना जाएगा Navadvipa Dham is no different from Vrindavan. नवद्वीप धाम में रहने से दोनों फल मिल जाते If you stay there, you get two fruits. हैं एक नवद्वीप धाम तो है फल है ही है The fruit of Navadvipa Dham itself, of course, और दूसरी and also वृंदावन की फल ही प्राप्त the fruit of Vrindavan also. होती है। नवद्वीप धाम में वृंदावन और नवद्वीप दोनों है Because Vrindavan, in Navadvipa, Vrindavan and Navadvipa both are there. In Navadvipa, both Vrindavan and Navadvipa are there. She's asking, why are devotees stay more in Vrindavana than not in Navadvipa? वृंदावन धाम के कहते हैं माधुर्य धाम
Vrindavan Dham is जब Madhurya Dham. वृंदावन नवद्वीप धाम की कृपा हो जाए When you get तो the आप mercy of वृंदावन धाम में Navadvipa Dham, रह सकते हैं। then you can stay in the Madhurya Dham Vrindavan. और इसलिए जो लोग वृंदावन में रह रहे हैं Those who are staying in Vrindavan now, तो समझना चाहिए You should वो understand. नवद्वीप धाम कृपा प्राप्त कर। they got the mercy of Navadvipa Dham. यदि कोई वृंदावन में रह रहे हैं If you are staying in Vrindavan, तो समझना you should चाहिए understand वो जन्म जन्मांतर में in other lives they already got the उनके mercy वृंदावन नवद्वीप धाम of वास हो गए। Navadvipa. They already lived in धाम की कृपा Navadvipa. करके वृंदावन धाम में Because without the mercy of Navadvipa Dham, प्रवेश कराया। you couldn't have entered Vrindavan. This is the thing. यदि कोई शरीर के द्वारा मन के द्वारा If वृंदावन your वास body कर रहे and your हैं, mind you're living in क्या समझना Vrindavan, चाहिए? you should understand वो पिछले जन्म में the previous lives, the previous life. और नवद्वीप धाम कृपा प्राप्त। You got the mercy of Navadvipa Dham. Means already you lived in Navadvipa Dham. इसलिए नवद्वीप ने क्या की नवद्वीप धाम ने उनको So Navadvipa वृंदावन में भेज दिया। sent you to एक Vrindavan. सिद्धांत तो दिया। There's also the एक कहते हैं Siddhanta. नवद्वीप में एक वृंदावन में रहता हूँ। Some people say, oh, I live in Vrindavan with my body and with my mind. I live in Vrindavan. If somebody says this, वो you पिछले can जन्म में understand. In the previous life, नवद्वीप the person already धाम को प्राप्त कर लिया। attained Navadvipa Dham. हाँ? मन से भी रहे तब भी प्राप्त। Even if he stays the mind, means he got the mercy of Navadvipa Dham. है? And अपराध भंजन वितरण। it's for the corpo. हमारे अपराध को धर्म। So Navadvipa is the place where all your offenses will be destroyed. वृंदावन की कहा जाता है सिद्ध भूमि कहा जाता Vrindavan is Siddha Bhumi. है। For the perfect souls, a place for the perfect souls, Siddha Bhumi. यदि कोई फिर कहे जो Another thing, okay. तो वृंदावन में रह रहे हैं If you say, तो I'm शरीर staying in के द्वारा Vrindavan मन now, वृंदावन में नहीं but है। not with my mind, only with my तो वो body. कैसे वृंदावन धाम में रह रहे हैं? So how can I stay in वृंदावन Vrindavan के Dham? धाम के ऊपर की जो So जाल है, there is a point. Actually, you're living on the net of Maya in Vrindavan. वो वृंदावन धाम में नहीं रह रहे। Actually, you're not staying in Vrindavan. Actually, you're staying on the net of Maya in Vrindavan. देखने में तो शरीर के द्वारा Looks like you're staying in Vrindavan because you're staying with your body, but actually, you're staying on the net of Maya. ये भी विचार दिया। There's also another conception. नवद्वीप धाम महात्मा में In the book Navadvipa Dham Mahatma, Srila Bhaktivinoda Thakur described this in details. इसलिए वही वृंदावन धाम का नवद्वीप धाम महात्मा. नवद्वीप धाम की कृपा हो जाती है। So है? तब माया देवी ने कि वो जाल को हटा लिया। when you इसलिए कृपा करो when you कि get the माया mercy of जाल Navadvipa Dham, आंखें then देखिए इस Yogamaya विशाल, will remove the net of Maya and you can see the transcendental Dham. है? इसमें तो ये करके सूक्ष्म So this is very subtle conception, slowly I'm telling you. है? ये नवद्वीप इसलिए कहते हैं साधारण साधक के लिए So for normal sadhakas, what is the thing? Navadvipa Dham. For the normal sadhakas, Navadvipa. Do you understand? इसलिए धाम वास की बात कहा गया। So Dham Vas, you should live in the Dham और धाम में वास कैसे करें? And how? अपराध छोड़ दो। without the offenses. है, यदि अपराध हो जाए इसलिए धामापराध के बारे में कहा गया। So also should consider Dhamma Aparada. कितने प्रकार के How धामापराध? many kinds of Dhamma Aparada are there? जिस प्रकार 10 प्रकार के नामापराध That's है, like, just like there are 10 10 Nama प्रकार के Aparadas, there are also 10 kinds of Dhamma Aparada. है। है। धाम में रहने वाले He wants to know what is the 10 Dhamma Aparada. Should never criticize a person who lives in the Dham. धामवासी की निंदा करनी। Never should criticize somebody who lives in the Dham. धाम में रह करके व्यवसाय वाणिज्य करना नहीं You चाहिए। should not do business in the Dham. है। Some perfect. धाम में रह करके If you stay in the Dham, व्यवसाय वाणिज्य करना नहीं चाहिए। like business, you should not do the business in the Dham. She's asking? Work, if you work, then it's business. Means this is offense. हैं? Or If one works, like if I stay and I do some job. if I work in the तो Dham, शरीर धारण के लिए आप कर रहे हैं। but you're doing to परिवार पालन पोषण to- आदि करने के लिए for to maintain yourself, but just to maintain family, then is business.
अरे अर्थ किस लिए कमाए? So why you're getting the money? This is the thing. भगवान भक्त की सेवा के लिए कर रहे If it's to serve God and the devotees, is okay. भक्तियों ठाकुर करे। Bhaktivinoda Thakur says. यदि केवल अपने But if you're getting the business, doing some business in the Dham for your own sense gratification, बात नहीं होता है। then you're actually this offense to the Dham. हैं? आप वृंदावन में रह करके You're staying in Vrindavan and doing some business. बिजनेस के तात्पर्य क्या है? What is the meaning of the business? What depends on the what for what you're doing that business for. ये वृंदावन में रह करके कोई बिजनेस कर If somebody is in Vrindavan and doing some business, some work or something for getting money, but what is for what you would spend that money? For what? For what you're doing that? You have to check this. धाम की जो कहते हैं धाम में रह करके यदि अपने सार्थक If you stay in the Dham for your own sense, like for your own selfish motivation, like for example, I'll get nice money here, 10 मंजिल 5 मंजिल then I can make a house of 10 storage, कम से कम 3 मंजिल बना लेंगे or at least 3 storages. ऊपर मंजिल में On the top, I will live with husband, wife, and my kids. And then low, under the second floor, I will just give in rent. In this way, I'll be able to live. Renting the second floor. अगर नहीं कमाएंगे तो लास्ट में फिर हम कैसे कर पाएंगे? दोनों चीज बैलेंस कैसे करेंगे? लास्ट में क्या करेंगे? मान लो अगर हम नहीं कमा रहे हैं For example, if we don't, we have kids, कमाने के लिए anyway, how to get money for have family, so you should not get money. They say no, you can get the money, but you have to use the money for the service of good and Bhagavan. You have to balance. सारे कमा करके अपने Yes, but if you get all the money and only use for your kids भगवान की सेवा नहीं हुई and not using for the service of Bhagavan, you're not serving the deity and in your house and also not serving the saints, then no benefit in this. वो तो धामवास लेके ग्रामवास हो Then actually you're not doing Dhamvas, you're doing Gramvas. Means you're not staying the Dham, you think actually material thing. धामवास और ग्रामवास So Bhaktivinoda Thakur gave this concept, Dhamvas, staying the abode of God, and Gramvas. Gram means like village, खाना है any तो place. जीवन Because of course, wherever you stay, you have to sustain your life, right? Wherever you stay. जो एकांतिक ही है वो तो But those who are completely on point, and this is another point. जो बिल्कुल Those who are completely रूप सनातन like Rup Sanatan, माधुकरी लेकर जीवन Just यापन करते थे begging and living their life ना for कुछ संग्रह begging. करना ना कुछ They करना, don't collect ना anything, शिष्य करना, ना they don't make किसी को मंदिर disciples, बनाना, they कुछ don't करना। want to make temple, nothing. करते थे Do they do? No. Rup Sanatan didn't build temples. अरे मदन मोहन ने मंदिर बना दिया रूप केवल सनातन को छोड़कर चले बोले मैं When Madana Mohan made the temple, Sanatana Goswami said, okay, I'm going. And then Sanatana Goswami went for parikrama and है कि नहीं when the temple of Madan Mohan was built and all. है बोले कौन इन्हें टेंशन ले भगवान I don't want to take this tension. I will just do Bhagavad Bhajan. टेंशन This tension of managing something, managing a temple, for example. लेना पड़ता है क्योंकि आप रूप सनातन के भजन नहीं But कर you सकते। have to take this tension because you're not like Rup Sanatan. You cannot do bhajan like them, so you have आप to. सब करके जाओ तो कहाँ जाओ फिर If you try to leave and go, then where will you go? टेंशन लेना पड़ता है You have to टेंशन accept से the तो फिर tension. धीरे-धीरे पेंशन मिलेगा Because ना। of the tension, little little you get the pension. टेंशन से धीरे-धीरे By the क्या tension, मिलेगा? little little you get पेंशन the मिलेगा। pension. और पेंशन से हो जाएगा And by the pension, very nice, you got what you wanted. टेंशन नहीं लो तो पेंशन कहाँ If से? you don't accept the pension, how to get the pension? पैसे कहाँ से देंगे? Like for example, the government will give you फिर pension. गवर्नमेंट आपको क्या देता है? पेंशन देता है If you got some tension before, if you get the tension in your life, then later on your government will give pension to you, and then like you're, then okay, good. Huh? धन कमाने के मना नहीं I'm करता। not prohibiting to make money or to earn money or और to रूप work. सनातन की भांति हो जाएगा, रघुनाथ भांति हो जाएगा। But if you're like Rup Sanatan, Raghunatha Dasa, then okay. But you cannot be like them. This is the हो point. सकते हो। Can you be like them? हैं? Can you? तो फिर So, सनातन के सब बस क्यों तुलना देते? so why you comparing yourself to him? You have to accept the tension. टेंशन को पेंशन देते। Rup Sanatan gave pension to tension. Why? ना वो लोग ऐसे ही थे। Because they were क्योंकि आप not taking that, सनातन accepting the के लिए tension. आपको क्या लेना पड़ेगा अभी? But you are not like them, so you have to accept that tension. हैं? मंदिर चलाना पड़ेगा। You have to rule the temple. You have to preach. हैं? अरे यही तो है सर्विस तो यही तो है। This is service. सेवा करना पड़ेगा। You have to serve. गंतव्य प्रकाश करो, ग्रहण करो। Print books, help in making the books. आज
हैं प्रचार करो to preach. लोग आएंगे People will come. इससे 1000 This is लोग the आएगा best. 1,000 people नहीं will आते ये come. लोग कहाँ से आते Otherwise, these people are coming from हैं? where? और ये नहीं आते If they would काम not ऐसे come, तो कैसे करते yes, they would have performed the अच्छा dance. लगेगा कि नहीं It was nice or not? हैं? ऐसे कभी कभी जरूरत होती है Sometimes it's necessary. सरकार The देखो, हम government, उदाहरण देते हैं, I'll give an सरकार example. जो है, The आर्मी government फोर्स पालते हैं keep the कितने army. करोड़ रुपए खर्च होता है Government क्या काम spends में आता है? billions of rupees maintaining army. But what is the duty of the army है? if there's no war, right? सरकार की The जितने government, इनकम होता है a great part of the income of the government, 2/3 जो है maybe 2/3, हैं, आर्मी में चला जाता 2/3 go to the army है पालना पड़ता है to keep just the क्यों उनके army. पालते हैं But why the government keeps the army? हैं? जब Because emergency होता है any उसके काम में- emergency, then the army हैं? will be there for serving. कहीं और कोई काम नहीं आता There's no any other job for the army. नहीं तो उनके खिलाना पिलाना कम कितने पैसे दिए सरकार How को? much money the government spends just to feed and maintain all the army. But when there's a war, then they come into action. आप ये देखो इकोनॉमिक्स देखो See, in the economics point of view, सरकार जो कितने the पैसे government spends हैं, so much money with the देते हैं आर्मी army. में देता है कि नहीं They give or not. हैं? तो ये आर्मी के जो पैसे कहाँ से आ रहे हैं But this money from the army is coming from where? सरकार जो दे रहे हैं कहाँ से आ The रहे government is coming. हैं साधारण लोग कमा रहे हैं Normal उसको people, टैक्स आ रहा है उसमें they are working and their tax is going to the military जो forces. टैक्स दे रहे हो So you're paying the tax. कुछ भाग Some part of it is going to the army. हैं? आर्मी में जो काम करता है Those who work उनके in the सब कुछ army, फ्री दिया जाता है They give everything. They get everything from free. Even फ्री में खाना they पीना सब कुछ food, देते हैं। everything for free. Even fans, so many हैं? things. तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं So this money is coming from where? ये साधारण लोग काम कर रहे हैं Normal people, they work और वो टैक्स जा रहे हैं and वो they टैक्स pay the tax. This tax, the government keeps the army people with these taxes of the normal है people, कि नहीं isn't it? कमा रहे हैं कौन आप Who कमा रहे is हैं। making the जा money रहे or कहाँ working? से? हैं? You. आर्मी के पास। But the money is going to the अरे आर्मी army. क्या कर रहे हैं But what's the army doing? The army नहीं, is 10 doing साल what? के बाद कोई Maybe attack after कर 10 दिया तो years, फिर somebody उनके attacked the country, then the उनके army जीवन sends. को क्या कर रहे हैं? दाम लगाना पड़ता है। Then they have to sacrifice their life in that moment. तुमको रक्षा करने के लिए ये लोग अपने जीवन के So क्या to करते हैं? protect you, they'll even sacrifice their own life. बलिदान दे रहे The military people, हैं? है कि नहीं isn't it? Think about it. है? मेरे कहने की यही तात्पर्य So I want to say is that इसलिए लोग जरूरत होता है लोग that's समझने why की जरूरत होता है। this is important to लोग collect the समझ नहीं people, हो, like to तो मठ बंद call the नहीं people. करेगा। If they're not collecting the people, then the temple cannot also remain. खिलाना पिलाना You पड़ता have to है feed everyone, देखभाल करना पड़ता take है care of everyone. काम में आएगा This will come to a use. It will be काम useful. में आएगा It will be useful, है कि नहीं isn't it? देखो तो ना ये सब हमारे कोई Otherwise, काम करनी है अरे there's ये no तो need काम of का these है, people. This is their use. I think Gurudev is talking about us, maybe. काम Western. में आता है I don't know. They will be useful. हाँ गुरुदेव विदेशी लोग विदेशी लोग no किसके बारे में बता रहे हैं गुरुदेव हमारे सबके लिए करनी है, okay सबके लिए। Gurudev is talking about everyone ये लोग नहीं आते if they तो will आगे not रास्ता come थोड़ी प्रचार हो जाता है। then your preaching will not happen without they the Westerners I think Gurudev is talking about भक्ति नाम तो प्रभुपाद प्रचार करते थे Bhaktivinoda Prabhupada used to preach आज नहीं 150 आदमी लेकर he used to bring 100 people along another what Ramanujacharya हाँ also preaching with many people प्रचार करते हैं preaching with many people along कैसे जाते हो? अकेला थोड़ी he जाते will not go alone when Ramanujacharya was preaching Gurudev will come alone what will I do alone if I go somewhere the Guru goes alone no इसलिए लोग समझो they have to collect the लोग people बल चाहिए so for collecting new people also need local ball means people to help collect more मैन people पावर और एक so manpower and money power मैन पावर होने से मनी पावर आ जाता है मनी पावर से मैन पावर दोनों ही एक साथ स्वास्थ्य के साथ क्या हुआ so both are connected जुड़े so manpower brings money power so brings manpower both are together both और जी so, money power brings manpower brings money power मन okay दोनों ही एक साथ में क्या है जो है वो both are connected हैं? अर्थ नहीं हो if there is no आप money प्रचार नहीं कर you सकते will not be able to preach और ज्यादा आदमी नहीं हो if there's not so many people also you cannot preach कौन तुम्हारी कथा सुनेगा who would listen to your katha हैं? अब बात सही है कि it's नहीं true or not हैं? हाँ
इसलिए भक्ति वेदांत साईं महाराज So Bhaktivedanta Swami Maharaj told, सादा हाथी लेकर गया सब काले I हाथी brought को these पकड़ने के लिए। white elephants to catch the black elephants. I brought these white elephants to catch the black elephants. सादा हाथी So I brought the white elephants from Western countries. white elephant. I brought white elephant from Western countries. Why? I brought Catch white the elephants from Western countries to catch the black elephants, means the Indians, the brown elephants, sorry. Oh yeah, Indians are brown. आज नहीं। Okay. हैं? वही साईं महाराज जब इंडिया में प्रचार करने लगे उतने लोग So when Swami Maharaj was preaching in India, before he was not captivating so many people, like captivating many people. But when he brought all these Westerners, everyone, he came back from England and preached in India with all the Westerners. Then it was a success in India also. ISKCON. इसलिए कहते हैं ये सब व्हाइट एलिफेंट है। So they are white elephants. You have to keep the elephants. You have to keep the elephants. Like take care of the elephants. Hati palna. Take care of the elephants. अच्छा हाथी पालते पालते क्या फायदा होता है? But what's the benefit you get keeping the elephants? You get the, how do you say, the marfin, ivory. You get the ivory of the elephants. ये हाथी के आइवरी बेचने से Actually, 10 रुपया मिलते हैं। How much, Papa? One ivory from? One ivory you get, then you buy 10 elephants. 10 elephants. From one ivory cost, if you sell one ivory, you can buy 10 more elephants. समझ में आता है? Do you understand? ये बड़ा उन्होंने बताया बड़े इसे क्या बड़े हाथी पालने में पैसा खर्चा था। So you have to spend a lot of money keeping the elephants, right? You have to feed the elephants. And खिलाना पड़ता है। looks like there's no use, but you have to spend a lot to keep the elephants. खिलाना पिलाना You have to feed them and make them stay. दामाद के प्रति आदर करो। Just like a son-in-law, you have to honor them just like a son-in-law, because in India, son-in-laws, they are taking a lot of, they give a lot of prestige to the son-in-law. But when finally the elephant gets the ivory, then you can sell the ivory and get 10 more elephants. और सब हाथी में दांत नहीं आता। But not all elephants they gave the ivory, but still have to keep them. Not all the elephants they gave that ivory. Sometimes very small, not so much. तात्पर्य क्या है? What is the meaning? ये काम में आता है। But it will come to a use later. It will come to some use. इसलिए प्रचार के लिए जरूरत होता So to preach is important. है। आज Or this is important for preaching. One Western came. All people come from the village to check the Westerners. अच्छा आप इंडियन जो But you're Indian. You are dancing. You're Indian. But everybody comes just to see the Westerners dancing. क्या? True. They are saying that they're here dancing. It's true. If an Indian girl is dancing, she'll dance the same dance. People will not be so attracted. Not so attracted. Ah, just like us. We are the same. घर का मुर्गी दाल के बराबर। Like, you don't give so much value to the things already you have in your house. कोई विशेष महत्व Ah, no, so important. है। और विदेशी जब करते What the Westerners doing? Ah, हैं, आज बात ऐसे ही है कि this is true or not? है, आप लोग यो किया था। You did that one. कुंज सजा हुआ। The, अब यूट्यूब में है ना। it's in YouTube. All the Indians did in Delhi that dance in that first Bhagavata there. उतना लोग इतने People didn't become so attraction नहीं। attracted. और यही विदेशी जब But if the Westerners are doing, oh, वही तो कह रहा हूँ ना। yes, because they're Westerners. There's no any other reason. Just because they're Westerners. There are also some white Indians, like for example, Ramani Didi, she's white, she looks like Westerner. But she has no value. You have value. Okay, you have. She also gave interview in the TV channel, Ramani Didi, devotee standing with her. No, report, I'm talking about report, I'm talking about the dance, one the dance presentation. 2017 2000,
17, in 2017, we did Sambhagavad Sapta in the Delhi temple, Chaitanya Bhagavat Sapta. They danced also. Sakitumara Kunja Sajago. People were attracted. Yeah. No, I'm not saying no. No, but she's saying she's saying no, in Delhi they are not so attracted by Western as like here. Gurudev said yes, of course in Delhi also everybody sees white collar people and white complexion and become attracted. In Delhi also. There's a psychological effect. Oh, look how they are following our religion, our like dharma, Hindu dharma, like that. Indian culture, like this. This is true. That's why to preach, the Westerners are important in the preaching. Do you understand? People become attracted. They become or not? They come only to see the Westerners. Let's see what is going on. Nothing is the same. They are also plastic bag full of blood, urine, bones, flesh, same material. Everybody's plastic bag or not? Western is also plastic bag. Srila Guru Govinda Maharaj used to say, just a white plastic bag and a brown plastic bag. Different between Indian and Westerners. All the bodies are plastic bags, material bodies. They have any jewels or some gems, diamonds or something in the body like Westerners, nothing. Same bad things inside. Blood, mucus, pus, stool, stupid nonsense, rascal, all the bad things inside of the body of the Westerners also. This is true or not? The body is a plastic bag. Srila Guru Govinda Maharaj said, only difference between Indians and Westerners is a white plastic bag and brown plastic bag. Everybody likes white for no any reason. She's saying in India the white skin is superior, she told. Because of Shrimati Radhika, Gurudev. Because Shrimati Radhika is Gauri, then that's why people like white. I'm thinking sometimes in this world the white people are seeing that because of Shrimati Radhika. Because of it. It's beautiful. Isn't it? But Krishna is black. Krishna is black. Krishna is also beautiful. Beautiful. The Westerners, they like black, they like Krishna. But the Indians, they glorify Radharani. So who is best? The Indian. Because the Westerners, they are in the side of Krishna. And the Indian people, they are in the side of Radharani. Who won? The Indians won. Isn't it? Yes. We are all in the group of Shrimati Radhika, but the Westerners are in the side of Krishna. Okay, we're in the mutual maybe, okay. Okay, let's accept both. Radha and Krishna. Jugala Sarkar, remember? Yeah, the government of Radha and Krishna. So, in India we worship the divine couple. Not only Krishna, not only Radha, both of them. It's like the mutual. So everything is reconciled, compromised. That's why you're criticizing me. No, I'm not criticizing. We worship both divine couples. So in Braja is written Jugala Sarkar Ki Jai, Jugala divine couple, the government of divine couple, or the lordships of the divine couple. Coalition government. Like two parties are ruling, not only one. Something like that.
किंतु राधा कृष्ण में जुगल सरकार चलती है, वो जैसे चलता है। But Radha Krishna both are together, both are ruling like this kind of देश में government. जो सरकार है, That's why the government of Braj is called जुगल सरकार, Jugal Sarkar. Both. The couples, government of the couple. गौड़िया वैष्णव की ही जुगल सरकार It's for the Gaudiya Vaishnavas. है। किंतु ब्रज में अब जुगल सरकार नहीं करता है, तो अब राधा जी के पक्ष But में actually, राधा in Braj, everybody is in the side of Radha also. Only Radha Radha. Nobody even has anything to Krishna. वृंदावन में जाओ किसको बोलते हैं? If you go to Vrindavan, everybody just speaks Radha अरे Radha. कृष्ण कृष्ण बोलो। Speak Krishna Krishna. Hey, Krishna, who wants to speak his name? हाँ, अरे जो रह गया फिर बाद में देखेंगे। He wants Gurudev to finish the lila about the flute. Gurudev is saying Yes? later. और चलो सब प्रसाद पाओ। Take prasad. हाँ, हो गया। Ah, yeah. एकादशी प्रसाद पाओ। Take prasad of और Ekadashi. फिर आप लोग 2 बजे निकाल दे सब। 2 p.m. everybody has to go. हैं? ओ आप लोग की जो फ्लाइट जो है, कंडोला जो ले जाना है, So those who go to आप Kandala, लोग को 12 बजे निकलना they पड़ेगा। have to leave at midday. 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटा, 1.5 घंटे होता है It's ना। 1.5 hour way. एयरपोर्ट छोटा है किंतु उसमें The समय airport लगता is small, but takes time to do the check-in and everything. है। 4 बजे का चेकिंग के लिए 2 घंटा तो लेना पड़ेगा। Yeah, it's cool. 12:30 बाइक आपको निकालनी ही पड़ेगा। You have to leave at 12:30 to take your flight at 4 p.m. in the airport. 20 बजे फ्लाइट है। 4:20 Four, we will fly. हैं? 4. साढ़े 12 बजे निकल देना। अच्छा है। 10 बजे। और ये जो ट्रेन में जा रहे हैं, Those who are going in the train, ट्रेन किस बजे है? what time is the train? वो भी 4 बजे है। Also 4 p.m.? No, 3:50 p.m. हैं?